and gentlemen, Times Now Bharat exclusive Operation Sheesh Mahal now has come out with a new exclusive news break, ladies and gentlemen. A news break that has taken to conclusion the investigation we began 10 days ago. Yes, Sheesh Mahal Khul Gaya. We've been asking for the last 10 days. Chief Minister Arvind Kejriwal, please show us your house from inside. We want to show. Please say it's lies. The documents that we showed you. The documents that showed you 11.5 crores spent on interiors, 3.5 crores spent on Vietnamese imported marble, 1 crore almost spent on curtains. We've been asking, requesting, please give us a tour of your home. But to no avail. On 3 different occasions, our reporters were roughed up. Our reporters were not allowed to ask questions. Our reporters were even threatened and thrown away, their mics taken away from them. But we continued our relentless pursuit of the truth. And tonight, ladies and gentlemen, it's the biggest news break that has set India's agenda. Tonight, on the most loved debate show of India, the Newshour at 9, we will reveal what the so-called Aam Chief Minister of Delhi has been hiding behind his 8 lakh rupee each curtains. For 9 days, ever since we exposed Arvind Kejriwal's 45 crore rupee splurge, we waited for an answer, but instead we were seeing the bullying of our reporters, the roughing up of our reporters, bouncers thrashing them. But today we will give you the Aam Darshan. Because Aam Admi ke liye to Aam Darshan ho sakta hai of the vvip Mahal, the Sheesh Mahal that the Chief Minister of Delhi has built for himself. The picture proof of grandeur that has been built from the taxpayers' money and my money, the taxpayers' money, with no regard to propriety. The images that I'm going to show you will give you the 5-star hotels a run for their money on the grandeur at play. Ladies and gentlemen, see one of its kind skylight roof, and this is coming up on our screens here. Look at the camera panning up, going up 3 floors to show you the Sheesh Mahal, the skylight roof of the Chief Minister's residence. Right, once again, that is the expanse of the skylight. That is the state of the art. That is the stylish, luxurious Mahal of the Chief Minister, Mr. Arvind Kejriwal. And this is only the first picture that I'm going to show you. We also want to show you tonight the 97 lakh rupee curtains. And here they come. Look at it from here to there. That is the drawing room, sitting room, call it what you will. Leather sofas here, the Dior pearl white marble design, polished, 3.5 crore, literally shining in your eyes. These are the sofas, these are the curtains. 1 curtain for 8.5 lakh rupees. I'm told they are fire-resistant curtains with remotes, shears at the back, and what have you. 8 lakh per curtain. Here are the curtains right here. Let me also show you the remote-controlled sliding doors to the kitchen. Those are the sliding doors. Bhai, why work hard? Why spend your energy when you can just walk in automatically, the doors open, and that is throughout the house. It seems like, because this is entry to one room, there is an that's the remote control. Well, remote controlled curtains, remote controlled doors, probably a remote controlled government in Punjab. We don't know. That is the luxury and style of Aam Admi Party Chief Minister, Mr. Arvind Kejriwal. Let me show you picture number 4, the exquisite kitchen. I mean, if I had a kitchen like this one, maybe I wouldn't be here tonight.
I would be rustling up new recipes every night, because this kitchen would make you feel like actually standing there and cooking new dishes every day. That's the kitchen. 32 lakhs. When we saw it in the documents that we showed you last 9 days, we've been showing you, and a wooden floor at that. I think it's wooden. I don't know if these are wooden finished tiles. I wouldn't know, but it looks like a wooden flooring, and we know a crore has been spent in the house on just wooden flooring and what have you. Let's also look at the interiors within the house. Well, that is the interior. Look at the expanse of the Dior pearl white imported marble. Look at the finishing on the walls, the interior decoration, the finish, what have you. That is really a palace fit for a king. Let me also show you the visuals of the lawn, the house, the exteriors of the house, which we've been showing our viewers. And I want to tell you a very important point. This video will tell you that the house in front was the original house of Mr. Arvind Kejriwal, which was the house he lived in for 2 years while the Sheesh Mahal was being built behind it. And this Times Now Bharat exclusive shows you the house was razed to the ground when the mahal behind it. You can see the mahal here. If we can freeze frame here, the mahal behind it was ready, and that's when this was razed to the ground. And let me show you the end result, the exterior of the house, which then had this raised house as the lawn in front. And that picture also available on our screens right here. Sharif, I would request you to pull out the visual of the house in front with a lawn and a parking slot on the side, a night view picture that is available. And here you can see these workers planting new grass when this lawn was being readied for Arvind Kejriwal. And this is the new house. Look at the lighting. Who wouldn't want to live here? And this really looks like the parliament to me. Was Mr. Arvind Kejriwal against the central vista? Then was he giving this almost a parliament kind of look with so many pillars, so many porches, the balconies? My God, how many Aam Admis could make their homes in the area where the balcony is? And this is the state of the art visuals. There are many more visuals coming up, but this is really the Sheesh Mahal of Mr. Arvind Kejriwal. And I want you to take a look at what people of India are talking about this. In fact, what the BJP says, and I also want to show you what Mr. Kejriwal has been saying about living a simple life. Listen in to first Mr. Kejriwal. इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं बननी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। इस देश का एक एक आम आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। ये भूल गए कि उनकी गाड़ी और उनका बंगला उस गरीब आदमी के टैक्स से चलते हैं। तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। Let's listen in to what Union Information and Broadcasting Minister Mr. Anurag Thakur had to say about this news break by Times Now about the interiors of Mr. Arvind Kejriwal's house. वो कहते हैं ना, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया भेद खुल जाएगा। 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी बंगले का हुआ है, जो कल तक कहते थे ना हम
सरकारी गाड़ी लेंगे, ना सरकारी बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे। आज बड़ी गाड़ी, दो राज्य की सुरक्षा और केवल रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास एक शब्द भी है इसका जवाब देने के लिए? शराब से लेकर शीश महल तक ये शोर शराब घोटाले का, शीश महल का बहुत दूर तक जाने वाला है। पहले ही आम आदमी पार्टी को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। So the legitimate question on the Newshour tonight is just one. When will Mr. Kejriwal break his silence? That's the question, and that's the debate coming up on the other side. You're watching the Newshour at 9. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining me on the debate tonight, Ajay Alok, national spokesperson of the BJP, making his debut as a BJP spokesperson. Good evening, Mr. Ajay Alok, and welcome to the Newshour on Times Now. Congratulations on your new role. Dr. Anand Ranganathan, author, scientist, political analyst, what have you. Avnijesh Avasthi, political analyst. Ravi Srivastav, political analyst, supports the Aam Admi party. रवि श्रीवास्तव जी थोड़ा स्माइल कर दीजिए, दिल पे मत लीजिए. परविंदर सिंह सेठी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आम आदमी पार्टी सपोर्टर also. तहसीन पूनावाला, political analyst, also joining the show. And tonight, ladies and gentlemen, I invite each one of you watching this show tonight to join the show. Take the numbers flashing on your screen, and in just about 10 minutes from now, I'll start taking calls. So please register your numbers and call those numbers flashing on your screen. But my first question, let me go to the non-political people on the panel, and let me ask Dr. Anand Ranganathan. Dr. Anand Ranganathan, we started Operation Sheesh Mahal, and we researched those documents. It was mind-boggling, the kind of documents, the kind of expenditure they showed. And I was very, very anxious that these should be original documents. The normal checks that a journalist does. Hope these are not fake documents, fraud documents, AI-generated documents. Hope these are original documents. We did our test. We put it out, but with some trepidation that, keeping our fingers crossed, nothing should be denied. For 10 days, no denial. But the fact is there is no explanation other than प्रधानमंत्री से पूछ के आओ उन्होंने इतने पैसे क्यों लगाए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री से पूछ के आओ उन्होंने इतने पैसे क्यों लगाए. But there has been no response, and we have been requesting for a tour because the Janta should see. They paid for this house, they should be able to see what they've paid for. But of course, you've seen how our reporters have been bullied and thrashed on 3 different occasions. Tonight, Dr. Anand Ranganathan, we have taken this story further by taking it upon ourselves to show the interiors that everybody was only imagining from the kharcha that we had seen in the documents. How would you look at this extravagant and luxurious mansion? Doesn't look like Mr. Arvind Kejriwal's, doesn't match with his statements of the past. Looks like some industrialist's big palatial house. How do you respond? Imported marble 6 crores, curtains 1 crore, interiors 11 crores, kitchen appliances 1.5 crores, wardrobe 1.4 crores, toilet 3 crores. That weather-beaten Aam Admi look with tattered chappals, loose pants, Reynolds pen, oversized unwashed shirt and oily hair, priceless. There are some things that an honest politician cannot buy. For everything else, there is master fraud. And that master fraud goes by the name of Arvind Kejriwal. Navika, this should be the new Aam Admi party ad featuring Kejriwal. Honestly, what a monumental fraud. 45 crores should have bought thousands of oxygen cylinders, opened tens of mohalla clinics, fed tens of thousands of Delhiites during the height of that devastating COVID Delta wave when tens of thousands of Delhiites died. Truly, truly, Kejriwal has made a marble mausoleum on the graves of Delhiites who succumbed to COVID. Shame on him, and
shame on Aam Admi party. I thought आप prided in being different from other parties. ऐसे different है आप लोग. This is the party that celebrates anarchy, that publicly implored citizens to elect goons and thugs, that bought out much of the media with taxpayers' money. It's the same Kejriwal who spent taxpayers' money for paying exorbitant lawyers' fees to the late Ram Jethmalani in case where ultimately Kejriwal had to furnish a groveling apology. So the taxpayers paid from their own pockets for Kejriwal's lies, and it is the same Kejriwal who demanded Bharat Ratna for Satinder Jain and Manish Sisodia, both cooling their heels in jail right now. Navika, our government ad spending has increased by 4,273% over the last 10 years. Last year they spent 488 crores on ads. But as I said, this new master fraud ad should be running on every channel and radio station. It is priceless, unlike Kejriwal's new Sheesh Mahal. It can't run on every channel, Anand Ranganathan, because it's exclusive to Times of Bharat. It is our team that worked on it. It is our team that has dug out these pictures that I'm showing even while you speak to our viewers, because everybody wants to see. Bhai, kya hai? Leather sofas, marble chamakta hua. You can actually see your face in it. Look at these interiors. 1 crore for a consultancy to whom we don't know. These are pictures that demand accountability. अब निजेश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सवाल है हमसे पूछा जा रहा कि जाओ पहले उस आदमी से पूछो जिसके घर पर 500 करोड़ खर्चे गए हैं. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये तस्वीरों पर सवाल पूछना गुनाह है? नाविका जी, आपसे सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि हमें मालूम है एक अखबार में रिपोर्ट छपी है, ये सारी तस्वीरें आपको बीजेपी ने दी है और इसलिए झूठी हो जाती है. ये आर्गुमेंट है. Amartya, can you not see my messages? उस पार्टी का. Can you refresh the Skype, please? I'm sorry, we'll connect with you, Anand Ranganathan. We can hear you. Yes, Abni ji. नाविका जी, पहला सवाल तो आपके ऊपर ये है कि आपको तस्वीरें जो हैं, वो जो फोटोग्राफ्स हैं, वो बीजेपी ने दी, इसलिए वो तो ठीक है नहीं, झूठी हैं वो तो. नंबर 1 बात. नंबर 2, आज एक बहुत बढ़िया आर्गुमेंट आया. आर्गुमेंट मुझे मालूम चला कि इन्होंने कहा कि सारी जब फाइल सीज कर लो, तो उन्होंने कहा आपके पास, एलजी के पास तो ये राइट ही नहीं है. और जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि एलजी से पूछो जाके, उन्होंने तब क्यों नहीं इंक्वायरी की थी. ये आर्गुमेंट आया कि आप अनिल बैजल से जाकर के पूछो. आपने अभी पिछले शो में, राहुल शिवशंकर के शो में कहा कि राहुल शिवशंकर जी, आपने अनिल बैजल से पूछा था जाके, आपने उनकी बाइट नहीं ली कि उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया. आज जब एलजी पूछ रहे हैं तो कहते हैं आपको हक नहीं है हमसे पूछने का, और कह रहे तब क्यों नहीं पूछा था. तीसरा बहुत बढ़िया आर्गुमेंट है जो पिछले शो में आया था, मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो ये सवाल करेंगे उसका पहले ही जवाब दे दूं मैं. तीसरा जवाब ये कि रेफरेंडम, व्यूअर ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल तो सबसे रेफरेंडम करते थे हर बात के लिए. तो एक आम आदमी पार्टी के सपोर्टर ने कहा नहीं, वो सेंट्रल विस्ता के लिए रेफरेंडम नहीं हुआ, इसका क्यों होगा. रेफरेंडम हुआ था, और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जी मुझे ये बड़ा घर दे रहे थे मेरे कुछ सपोर्टर्स, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स, मेरे कुछ मित्र, करीबी लोगों ने कहा कि नहीं अरविंद केजरीवाल ये ठीक नहीं है तुम्हें, तो मैंने सरकार से कहा कि मुझे छोटा घर दे दो. रेफरेंडम हुआ, इनकी पार्टी के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि इतने बड़े घर में मत रहो. वो तमाम लोग जिन्होंने वोट दे करके इनको सरकार में सत्ता सौंपी, उन लोगों ने कहा कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो, हर आदमी को अपनी औकात याद रखनी चाहिए, एक्सेप्ट अरविंद केजरीवाल. वो याद नहीं रखेंगे. ये वो अरविंद केजरीवाल उस समय मकान बन रहा था जिसमें आपको मालूम है, ये सिर्फ आप कोरोना की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजेस हैं जिनकी सैलरी दिल्ली सरकार को देनी होती है. कई महीनों तक सैलरी नहीं मिलती थी वहां पर टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ को. ये हालत थी वहां पर. और आज वो तमाम लोग, अगर मान लीजिए किसी मीडिया कर्मी से जरा सी कोई, अगर मान लीजिए अगर कोई रोक भी दिया जाए, तो वो कहते हैं कि देखो इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया, उस पे इंडिपेंडेंसी पे इंडिया का नंबर क्या है. सरेआम आपके राकेश पांडे से लेकर के कुंदन तक को मार पिटाई की गई. एक आदमी तो माइक छीन के भाग गया, ऐसे लोग हैं आम आदमी पार्टी में. और इसके बावजूद कहीं कोई किसी तरीके की कोई आवाज नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि अब लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में है. रेफरेंडम की बात कर लो, बीजेपी से फोटो लेके आए. मैं इतना और बता दूं कि बहुत सारी खबरें और भी छप रही हैं, उस पर भी पढ़ लेना जरा.
कि कहां कहां से ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो इतने सारे खुलने हैं, इतने सारे स्केल्टन निकलने जिसकी अंदाजा भी नहीं है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शीश महल का अंदर का टूर हमने प्रॉमिस किया था और हम रिक्वेस्ट करते रहे मुख्यमंत्री जी से कि हमें आने दो, कैमरा लाने दो, लोगों को, जनता को दिखाना चाहिए। नहीं हमें अलाउ किया। मेहनत की, 10 दिन समय भी लगा, लेकिन आज वो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। There are more visuals, ladies and gentlemen, so don't try and change your channel because you must watch each and every picture, each and every video. But परमिंदर सेठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज क्या जवाब देंगे? जाओ उस आदमी का जवाब ले आओ। वो अब 10 दिन पुराना आंसर हो गया। आपसे मेरा यही सवाल है। सवाल ये है कि क्या ये आम आदमी और आम आदमी के मुख्यमंत्री का आवाज हो सकता है? और मैं आपको वो पूछ रही हूं, जब ये कहा गया था कि छत टूट रही थी, गिर रहे थे, मारना चाहते थे आप मुख्यमंत्री को, तो कोई टूट नहीं रही थी छत, वहीं रह रहे थे 2 साल। 2 साल उस मकान में रहे। जब पूरा शीश महल तैयार हो गया तो ये मकान गिराया गया और उसकी जगह ये दिखाती हूं, ये आलीशान लॉन बन गया। दिन में देखें तो ऐसा दिखता है, रात में देखें तो ऐसा दिखता है। क्या लाइटिंग! राष्ट्रपति भवन भी शर्मा जाए। देखिए, जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को ये चुनाव में नहीं हरा पाते, उसको ये इस तरह से चारों तरफ से टारगेट करके फिल्में बना के, मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। आपने बोला कि परविंदर सिंह आप समर्थक हैं, आपने अवधेश जी के बारे में तो नहीं बोला कि ये बीजेपी समर्थक है, आपने डॉक्टर रंगानाथन के बारे में तो नहीं बोला ये बीजेपी समर्थक है। हर व्यक्ति एक का फॉर्मेट है, जो भी राजनीतिक विश्लेषण। जेएनयू के प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवनीश जैन जी प्रोफेसर हैं, जिसके मर्जी समर्थक हो, तो फिर दे आर फ्री। नहीं, आई एम ऑल्सो फ्री, किसी का भी समर्थक हो सकता है। लेकिन आपने स्पेसिफाई करा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप स्पेसिफाई करते हैं। चलिए, तस्वीरें सही है या गलत? देखिए, अगर तस्वीरें क्या बता रही है? अगर ये तो आपने जो फिल्म बनाई है, सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी का ऐसा शौक होता, ऐसा एम्बिशन होता, तो वो 9 साल तक इंतजार नहीं करते। वो 9 साल तक इंतजार नहीं करते। आप 45 आप मेरे साथ चलिए, कितने मेंबर पार्लियामेंट, कितने सेंट्रल मिनिस्टर, कितने अदर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आवाज इससे भी बेहतर बने हुए हैं। आप सबको लेके आइए ना चैनल पे। व्हाई आर यू टारगेटिंग वन पार्टी, वन पर्सन? व्हाई आर यू टारगेटिंग वन पार्टी, वन person? The other chief ministers, the other parties, the other MPs did not start their journey from no, they did not start their journey with being like अन्ना हजारे। अन्ना हजारे के कंधे पर बैठकर कोई नहीं आया था। किसी ने नहीं कहा था कि हम 4 कमरे के मकान में रहेंगे, किसी ने नहीं कहा था हम वैगन आर में रहेंगे। कोई ऐसा नहीं था। पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रश्न है कि आपने ये कहा, आपने ये कहा। आप देखिए ना, उन्होंने काम क्या करा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली में, पानी में, बाकी चीजों में। आपने क्या करा? आपने देश के, ना आपने किसान को छोड़ा, ना आपने जवान को छोड़ा, ना आपने खिलाड़ी को छोड़ा। आप उस बात का जवाब देंगे? जंतर मंतर में 12 दिन अजय आलोक जी बैठे हुए हैं, हमें इजाजत नहीं है, उसके ऊपर डिबेट होने, हमें इजाजत नहीं है अजय आलोक जी। I don't have the right to ask the question about Arvind Kejriwal ji. ये डिबेट जरूरी नहीं है। Well, I have to ask every other political party. I have to ask 543 members of Lok Sabha and another 250 of Rajya Sabha. I have to ask them first before I can ask any question to Mr. Arvind Kejriwal. So I can't ask. I want you to respond to the charges made by Mr. Parminder Sethi. नहीं, मैं वही कह रहा हूं। नहीं, मैं तो अजय आलोक जी से पूछ रही हूं। Parminder Singh is defending a thing which cannot be defended. एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं नविका जी, कि यहाँ
तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। तुम दाम तो लगाओ, यहाँ ईमान भी बिकते हैं। This is corruption glorified at the best. And you know how it can be done? It can only be done by AK, because he's an ambitious corrupt. See, many people are corrupt, but the difference between being corrupt and being ambitious corrupt. ये महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचारी है। मैं बता रहा हूँ, ला रहा हूँ उस पे करप्शन का। प्लीज डोंट इंटरफेयर। अब ला रहे हैं बीच में करप्शन, बता रहा हूँ कहाँ से। नहीं, आप कह रहे हैं 9 करोड़ 99 लाख। आप अभी तो प्रवक्ता बने, कल तक आप कहाँ थे? अरे एक मिनट बता रहा हूं कहां से ईमान बिक रहे हैं। एक मिनट सुनिए तो सही, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मैं सुनने के लिए बैठा सर, आप बोलिए। 9 करोड़ 99 लाख 99 हजार, 9 करोड़ 99 लाख 99 हजार विड्रॉ किए जाते हैं 10 करोड़ के ब्रैकेट में। इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इसका ऑडिट वो तो बोलने दीजिए सेठ। 1 करोड़ रुपए कंसल्टेंट को दिए जाते हैं, किस कंसल्टेंट को दिए गए? अगर सैंक्शन होता है कोई चीज, वो आपको तभी तो अवेलेबल है। केस और वो तो सारा अवेलेबल है, तभी तो आपको मिल गया। कोई चोरी छुपे थोड़ी लगा दिया पैसा, रातों रात चोरी छुपे ब्लैक मनी थोड़ी लगा दी। व्हाइट का पैसा सरकार का, व्हाइट का पैसा नहीं, जनता का पैसा है, टैक्सपेयर का पैसा है। लोगों के पास में 1 मिनट सेठी जी, आप सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, जवाब उसके बाद दीजिएगा। सवाल पूछने की तो इजाजत है ना? हाँ प्लीज प्लीज। अजय आलोक जी, ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा है जो बिना टेंडर के आपने किया। आप 145 करोड़ का घर बनवाते हैं, लेकिन टेंडर के थ्रू करते, कोई आपको पूछता नहीं। आपने किसी से परमिशन नहीं ली, कोई अथॉरिटी नहीं ली, इसका ऑडिट कैसे होगा? केजरीवाल के अंकल पैसा देके गए थे कि दिल्ली की जनता का पैसा है, अपने मन से खर्च कर देंगे। एक पैसा अकाउंटेबल लौटाना पड़ेगा, पहले भी लौटाना पड़ा है। वो जनता के टैक्स। अब सुनिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री allow me to come in. Caller, our phone lines are ringing non-stop. Phone lines ringing non-stop. Phone lines ringing. इस देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। इस देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते जो एक व्यक्ति पे एक संविधान। नविका जी, this man will be sued, I'm telling you. He is telling me that PM wore the suit which was given by the taxpayers' money. It's absolutely false. 1 minute, Absolutely false. Sethi ji, there are rules of a debate. Allow the rules to perform. Let's be courteous. सुन लीजिए, इनकमिंग बैन होगा तो डिबेट कैसे होगी? अजय आलोक जी, किस बात पर सू कर रहे हैं आप? ये झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे प्रधानमंत्री ने जो सूट पहना था वो जनता के टैक्स पेयर के पैसे का था। वो टैक्स पेयर के पैसे का था। सूट की तो बातें नहीं उल्टा ऑक्शन करके उसके जितने पैसे आए वो सरकार के ट्रेजरी में गए। वो सरकार के ट्रेजरी में गए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रही है। ऑक्शन करके जितने पैसे आए वो सरकार के ट्रेजरी में गए। Calling in, Pankaj calling in from Hyderabad, Ricky calling in from Ahmednagar. Good evening, Pankaj, and good evening, Mr. Ricky. Pankaj, what's your question? What's your comment? मेरा सवाल, हेलो, Yes, go on. मेरा सवाल रवि जी से है। ये पिछले 4 दिनों से कह रहे हैं कि ये सरकारी आवास है, सरकारी पैसा है, इसलिए हमने बेदर्दी से खर्च किया है। तो क्या इनका कहने का मतलब है कि इतना पैसा बेदर्दी से खर्च नहीं करते हैं? ये पैसा बेदर्दी जो खर्च करते हैं और फिजूल खर्ची करते हैं, सरकारी पैसे और सरकारी आवास की करते हैं। जवाब देना चाहेंगे रवि श्रीवास्तव जी? एक और कॉलर है, रिकी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? Navika, I wanted to state that the house that all this renovation was happening, that house has been destroyed. So that means now we have to take the charges of this new house being built totally plus the 45 crores. Well, yeah. हिसाब कौन करेगा? Who's going to keep these accounts? I don't know. Also calling in Raghuvendra Singh from New Delhi and Shankar from Bengaluru. Raghuvendra Singh, your question? नाविका जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। आमंत्रित गेस्ट को मेरा सादर प्रणाम। मेरा एक छोटा सा सवाल परमिंदर सेठी जी से है कि इस देश का आम नागरिक की इतनी औकात है, क्या वो अपने लिए घर बना सके और उस पे 55 करोड़ का रेनोवेशन करा सके? प्लीज टेल मी। ये रेनोवेशन तो है ही नहीं। हमने आपको तस्वीरें दिखा दी कि पुराना महल गिरा दिया गया, नया महल बना दिया गया।
मैं आपको बताऊं, देखिए जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बोला 30 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन वो वट एवर अमाउंट इज वो विषय नहीं है। विषय ये है कि बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पावर के अंदर है, वो एक लाइन ड्रॉ करे कि एक मुख्यमंत्री का आवास कैसा होना चाहिए, उस पर कितना पैसा खर्च होना चाहिए। आप सरकार में तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक पार्टी को बोलो जो हम पक्ष में है, हम तो जो मर्जी करेंगे, हम तो 8,000 पर आप तो अलग थे ना सबसे। शंकर कॉलिंग इन फ्रॉम बेंगलुरु। हमने मजबूरी में। शंकर जी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? गुड इवनिंग। Good evening, Navika. I really miss your program. There is a Newshour debate, and you're one of my favorites. I'm losing your voice, Mr. Shankar. Your network is really bad. We'll try and reconnect. Also, Arun calling in from Kolkata. Good evening, Mr. Arun. What's your question? See, I wanted to ask is that when Arvind Kejriwal used to say that इनका गाड़ी का पेट्रोल आम आदमी के पैसे से चलता है, इनका गाड़ी का पैसा गाड़ी आम आदमी के पैसे से चलता है, इनका एसी आम आदमी के पैसे से बिल भरा जाता है, तो आज ये बिल्डिंग किसके पैसे से बना है? बताइए रवि श्रीवास्तव जी, ये जनता के सवाल है। मिस्टर रवि श्रीवास्तव। Mr. Arun, when he said those things, he was an activist. And activist, after that, when he got elected and he became a chief minister, he started for working for those people, and he saw to it that their electricity, their water, their health, education becomes free. Because it should not be a proprietary of only politicians, the prime minister, the chief minister, the other ministers. So he wanted that only VIP should not get the privileges. Some kind of relief should be given to a common man also. And that's the reason, not once, not twice, not thrice. Fair point. Times, activist, when you're an activist, you say something, you can't be held responsible if you change your mind when you become a politician and a chief minister. Fantastic argument there, Tehseen Poonawalla. I can see you laughing, but I'm coming to you. But I want to do a big revelation of yet another picture of the floor of Mr. Arvind Kejriwal's house, and that is the picture of the gym, the spa, the state-of-the-art jacuzzi that is inside, and look at the marble. I think it puts to shame any 7-star hotel as well. That is a top floor for the free health services to the Chief Minister of Delhi from the taxpayers' money. Arvind Kejriwal ji, ye आपके लिए गिफ्ट है जो टैक्स पेयर्स ने आपको दिया है, और आपने खुद अपने आप को दे दिया है टैक्स पेयर के पैसे लेके। तहसीन पूनावाला, फिर ये भी हेल्थ फ्री, इवन मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज अलाउड. So is this justified? The line that comes to my mind is the famous commercial, "Ye dil mange more." The more you spend, it's on taxpayers' money. And then, you know, the Nike commercial that just do it, just go ahead and do what you want. This is a luxurious gym. I use the gym, and I have never seen it this beautiful. So I request the Honorable Chief Minister of Delhi, if Anand, I can take my good friend Anand Ranganathan to the gym here and the spa. But I promise you, Anand, we will not have the Satendra Jain type of massage here. We will just use these facilities. But Navika, you know what I'm very disappointed about? I object to this analysis. But you know, the 1 crore rupees that they've spent to the consultant on the interiors, Navika ji, I have to tell this to your viewers because you said this on the other channel. They've spent 1 crore rupees on the consultant who's fitted wooden flooring in a kitchen. Anand, you're a scientist. You must hear this. Have you ever in your life seen a wooden flooring in a kitchen which can catch fire? The one thing in a kitchen you don't have is wooden flooring because an oil can slip on that. They've put glass roofs, Anand, to conserve energy in a city or state which has 300 days of sunshine. This is the kind of con job that is going on, and they believe that we are all fools to be looking at this. But Navika, congratulations to you. This is a fabulous exposure. This is genuine exposure. You've come up with documents, hardcore evidence, and the Aam Admi party needs to be answerable. And also congratulations to Ajay Alok as I end on becoming the BJP spokesperson.
Dr. Anand Ranganathan, my question is, and I want to show you expenses. Expenses today, 10 Downing Street, downtown London, and Europe is supposed to be extremely expensive. Downtown London costs about 5.3 million pounds. That's about 54 crores. By 54 crore में ऋषि सुनक रहता है, तो अरविंद केजरीवाल जी 45 करोड़ के घर में क्यों नहीं रह सकते भाई? वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पुलिस उनके अंडर नहीं है तो क्या हुआ? रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल से दरवाजे खुलते हैं so that he doesn't have to actually push any door. They open on their own, and he can use a remote for the curtains, fire resistant curtains, I'm told. That is why they cost 8 lakh rupees per piece and 1 crore for 23 such curtains. You know, that's the kind of extravagance. What can be the explanation, and can the explanation be, भाई जाओ तुम उससे पूछ के आओ कि प्रधानमंत्री निवास पे 500 करोड़ क्यों हो रहा है? Is this an argument that anybody in this country will buy? Navika, I just need to say two things. One on a serious note and the other on a not so serious note that exposes the hypocrisy. और ये जो आपके sympathizer हैं, उन्होंने कहा कि बाकी सारे नेता और चीफ मिनिस्टर भी ये करते हैं. बिल्कुल ठीक बात बोली, लेकिन आप तो डिफरेंट थे. आप अन्ना हजारे के मूवमेंट से आगे बढ़े. अन्ना हजारे के घर गए हैं आप कभी? मैंने देखा उनका घर. मार्बल भी नहीं है, फ्लोरिंग भी नहीं है, और ये उनके शिष्य हैं. मेरे से ये मेरा एक ही सवाल है कि जब आपने 6 करोड़ मार्बल फ्लोरिंग पे लगा दिए, तो आप 12 करोड़ लगा दें, 20 करोड़ लगा दें. हु इज देयर टू स्टॉप यू? कोटा मार्बल क्यों नहीं लगाया अगर आप आम आदमी थे? और नंबर 2, जब आप कोविड वेव, डेल्टा वेव में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मोदी जी मुझे पैसे दो, मुझे सिलेंडर्स खरीदने हैं, मुझे अपने दिल्ली वालों को बचाना है, दिल्ली वालों मैं बचाऊंगा आप लोगों को, पैसे तो मिले सेंटर से. उस टाइम पे 45 करोड़ अपने टॉयलेट्स और किचन अप्लायंसेस और रिमोट कंट्रोल कर्टन्स पे खर्च कर रहे हैं. कोई शर्म बची है या कबाड़ी में बेच दी और जो 20 रुपए मिले उसे हेयर कट करा लिया? परमिंदर सेठी जी, अरे आप एक बात बताइए, जब देश का मामला है, कोविड का मामला है, अगर सेंट्रल सरकार के बाप का पैसा तो है नहीं, वो गवर्नमेंट सारी लोगों के, जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता के ऊपर खर्च करने के लिए उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं. ये जो टैक्स पेयर का पैसा है जनता के ऊपर खर्च करने के लिए, तो फिर 45 करोड़ घर के ऊपर क्यों है? अगर टैक्स पेयर का पैसा जनता के लिए है तो 45 करोड़ का घर क्यों? लेदर के सोफा क्यों लेके आ रहे थे? क्यों टाइम में आप कृषि बिल लेके आ रहे थे? कॉलर्स आर कॉलिंग इन, को मारने का काम है. कॉलर्स आर कॉलिंग इन, नीतीश कॉलिंग इन फ्रॉम पर्थ. इसके ऊपर तो आपकी जुबान नहीं निकलती, मुंह में दही जम जाता है. जब किसानों की मृत्यु हो जाती है, 800 किसानों की कोरोना काल के अंदर आप कृषि बिल लाते हो, बंगाल के अंदर चुनावों में जाकर अलग हो गया. आप कोरोना काल में, मैं आप कोरोना की बात कर रहा हूं. कोरोना काल में 12 करोड़ की आप कोरोना काल में महल क्यों बना रहे थे? तब तक आप पानी, मुख्यमंत्री निवास पानी पीजिए. मेरे पास परमिंदर सेठी जी, आप पानी पीजिए, क्योंकि जनता के सवाल आ रहे हैं, जनता के सवाल आ रहे हैं. तब तक पानी पीजिए. नीतीश कॉलिंग इन फ्रॉम पर्थ. Good evening, Mr. Nitish. What's your question? Good evening, Madam Navika, Madam, and good evening all the panelists in the Times. I really congratulate everyone for breaking this episode with, we are really appreciate you on this. Thank you and very much. Actually, we are the one 4-5 years ago donated Arvind Kejriwal from Australia as well, thinking that he's standing on like with a motive of saying Aam Admi. We don't have chappals to wear. We don't have laptops to be with. We don't have a car to go. But now this looks like entire false narrative he put in front of everyone. And last 2 years we already ditched him because we knew what he is. He is a complete liar. And this is what the whole outside the world, whole of the people from outside of India. I understand that, Mr. Nitish. Many people today, I'm sure there are many who still continue to support him blindly like Mr. Parminder Sethi and Mr. Ravi Srivastava. But there are others who feel cheated. Thank you for joining us on the Newshour tonight. Mr. Manoj calling in from Kolkata, Captain Jaspal from Rohtak.
मनोज जी नमस्कार, ये शीश महल का नजारा ये जस्टिफाइड है? नमस्कार, मेरा सवाल रवि जी से है। रवि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 2-3 लाख रुपए के कमोड से मुझे ये कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये ठीक हो सकता है? वेल, रवि श्रीवास्तव भाई 2-3 लाख का नहीं था, वो 4.25 लाख का था, बट रवि श्रीवास्तव जी, आई कैन शो यू द टॉयलेट पिक्चर्स एज वेल, आई शो यू द बाथरूम पिक्चर्स एज वेल। आई एम हैप्पी टू देने दीजिए। हाँ, आप जवाब दीजिए, जवाब दे देने दीजिए, जवाब दे देने दीजिए। हाँ देखिए मनोज जी, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके पास के आयुर्वेदिक केमिस्ट के पास में अच्छे चूर्ण मिल जाएंगे, वो खा लीजिए, आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा। और ये बता दूं, ये पिक्चर्स रियल नहीं है, ये सब पिक्चर्स एनिमेटेड है। एनिमेटेड पिक्चर्स, ओह माय गॉड, सच्चाई नहीं, एनिमेटेड पिक्चर्स है ये पिक्चर्स। एंड नाविका, माय वन क्वेश्चन टू यू, कम से कम आई एम वेरी हैप्पी आपने कम से कम ये तो नहीं कहा कि ये बीजेपी ने लिए हैं। आज आप कह रहे हैं एनिमेटेड पिक्चर्स। आर यू नॉट Navika, you are also an hologram. They only manufacture it, you only pass it on. They manufacture it, you pass it on. Okay. They manufacture it, don't worry. Okay. And another thing is that you are showing a chief minister house. Are you not putting him to a serious security risk? Are you not putting him to a serious I'm not showing the perimeter of his house. Why is it a security risk? Outside. No, you are showing it. Navika, you are showing it. You are putting him to serious security risk. I finally understand. You are showing outside periphery. Oh my God. Oh my God. Okay, now I'm compromising the security of the chief minister. I'm compromising the security of the chief minister. Do you think Anand Ranganathan showing the truth to the people is compromising his security? Do you have guts to show? Do you have the guts to show 7 RCR? Can you show 7 RCR like this? Okay. Can you show me? All right. Do you have guts? I'm your correspondent go there? I'm showing the interior. I'm showing the interior without the people, bhai. Where is it a security risk? Anand Ranganathan, I call it a yellow journalism. Can you please, this person, please, Ravi ji, please. आपको अपनी एज का वास्ता, प्लीज। नाविका, I am the person. No, don't worry about my age. You bother about your statement. No, I respect you. You don't look a day older than 85, please. Navika, looking at those pictures of toilets, now I finally understand. You give the argument if you have. Yes, he is giving the argument. Let's not get personal. These are not real age pictures. is not important. Age is not important here. Ravi Srivastava ji, what are ages is not important. I least bother about it. Yes, sir. Age is, let's not go to the age. There are far more important things to discuss here. Anand Ranganathan, make your point. I have 2 callers waiting on standby. Navika, looking at those pictures of Alishan Kejriwal ji's toilets, now I finally understand what he means when he says privilege motion. No, but honestly, somebody has to ask him. No, sir, Navika, the problem is that there are psychopaths. That's why I said it is a comedy show. There are psychopaths. You are making it a comedy show. There are psychopaths. Yeah, you are making it a comedy show. Animation. This is what comedy show is. Say it is animated films that we are showing. That is not a comedy show. Yes. Ravi Srivastava, don't take yourself so seriously. Prasanna calling in from Bengaluru, also calling from Bengaluru is, well, we've lost one caller. Prasanna from Bengaluru, Lalit from New Delhi. Prasanna, good evening. Do you think this is an animated film that we are showing on Times Now on the Newshour tonight? Good evening, Navika. Can you hear me? Good evening, sir. Yes, we can hear you. Yeah. And Navika, in fact, I can't say I'm pleased to be on the show in a shouting match. Honestly. Okay, first thing. Second thing, I actually, for and against both the parties, for fact is, it is a chief minister's residence. It has to have some kind of a status. It has to have some kind of a dignity when you're receiving foreign dignitaries.
and other important people, it should have a kind of a... Okay. Hello? Yes. So I would love to have a chief minister's residence which is actually, which has a grandeur, first thing. Second thing, okay, just to counter that particular thing, I have voted for BJP all along, so I'm not an AAP supporter, right? So I also kind of oppose the argument being put forward by certain panelists here, saying that, you know, they're just politicizing the whole issue there, right? Which I feel is not the right approach to the whole affair. But you haven't commented on whether this is an animated film or are these real pictures? No, I feel it is real pictures. Well, I feel it is Mr. Ravi real Srivastava, that's the janta for you. Thank you very much, Mr. Prasanna. Good evening, Mr. Lalit. I'm sorry. All right, you can be sorry. I'm sorry. Mr. Lalit. I don't agree with Mr. Prasanna. Mr. Lalit, my question to you, Mr. Lalit, is, do you think this is a Sheesh Mahal or a Chief Minister's residence that befits the stature of the post he holds, or do you think this is ostentatious and luxurious beyond what Mr. Arvind Kejriwal used to talk about? Navika ji, the only thing I can say, this is next level, probably an Indian cannot dream of. The only thing, besides congratulating the Times Now team, I request you with folded hands, please can you get Mr. Anna Hazare on line once? A folded request from an Indian who voted on the word of Mr. Anna Hazare for these people. And I pity these supporters sitting on your panel. They have a very dirty and a difficult job to do. But kudos to you, Times Now. Just keep it up. Thank you so much. Thank you so much. And thank you for all the encouragement, Mr. Lalit. Ajay Alok, the question tonight is, of course, a chief minister cannot live in a hut. Nobody is saying that. An ordinary bungalow or a bungalow which is better than Aam Admi is also good. A presentable bungalow, a house that is good enough to hold meetings, to have political interactions, to welcome guests, maybe getting investments into the country. The question is, are we actually feeling jealous about the house that he lives in, which is within the rules, within the ambit of the chief minister to have, or are we quibbling about the manner in which this has been done? Where is the problem? I want you to spell that out from your point of view. See, the simple problem is, I told you, there is no transparency in this. First of all, housing norms were flouted. 2021 Delhi master plans were completely ignored. Second thing, why there was no tender if we had to make a new house? Why there was no tender? Why 9 crore 99 lakhs 99,000 were taken out from the exchequer? Why LG approval was not sought? I'm not talking that what he has made. The very intent of making this house was a question. That's why what I call the scam. This house could be of 30, 31 crores, 25 crores, 20 crores. That is debatable. But where the rest 25 crores have gone? Well, who will do the audit for this house? Well, I guess that's a valid question, but the question is also about what Mr. Arvind Kejriwal stood for. And I want to play out the bite of Mr. Arvind Kejriwal, where he said that he was against vvip culture. Let's listen in to Mr. Arvind Kejriwal. आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। परमिंदर सेठी जी, एक पुराना गाना है और हमारे हिंदी फिल्मों के गानों में वो सारे रस हैं जो आपको किसी भी सिचुएशन को समझाने में बड़ा आसान कर देते हैं। एक गाना है जो कहता है एक बंगला बने न्यारा, पुराना गाना है। फिर उसके बाद एक है गाना आया, एक और नए जेनरेशन का गाना, वो था एक महल हो सपनों का, तो वो भी फिट होता है। और एक बड़ा पुराना गाना है जिसमें ये कहा था गाने वाले ने, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
तो आज ये गाना जो है ये बहुत फिट होता है अरविंद केजरीवाल पर। ये दृश्य देखकर, ये पुरानी बाइटें सुनकर ऐसा लगता है वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, आम आदमी वीवीआईपी है। भाई ये क्या है? 9 साल से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इनको कोई बात नहीं मिली, अब ये उसको लेके बैठे हुए हैं। लेकिन आप, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आप ये बात बताइए ना, अपने उसमें भी तो झांक के देखिए कि आपके लोग क्या कर रहे हैं। उनके आपको जी मेरे लोग नौकरी पर बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी तो बात उनकी बात, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, अदर स्टेट के सीएम की बात कर रहा हूं, जो सेंट्रल मंत्री हैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश में 2 कानून नहीं हो सकते। देश के, उनका निजी आवाज तो है नहीं, आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल को कोई और होगा। जो मुख्यमंत्री का आवाज जैसा बनता है उस प्रकार से उन्होंने बनाया। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी कहा कि मेरा मकान ऐसा होना चाहिए। ये तो आप फैब्रिकेटेड मूवी बना रहे हैं, एक फिल्म बना रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। Tell me which part of this is fabricated. I've heard enough of this fabrication bit. Tell me which picture is fabricated. Is this not the house? I challenge the Aam Admi party to come out and deny that this is the house that Mr. Kejriwal lives in. This picture, आपको दिन की देखनी है कि रात की देखनी है? मैं सारे ऑप्शंस है मेरे पास। ये दिन में ऐसा लगता है, ये रात में ऐसा लगता है बाहर से। सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, मैं लॉन और घर की बिल्डिंग दिखा रही हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क अवनीजेश अवस्थी जी, अवनीजेश अवस्थी जी, इसमें से क्या गलत है, क्या एनिमेटेड है, क्या फरेब, क्या झूठ? नाविका जी, आपने सारे तर्क सुन लिए। अब ये बात सिर्फ एनिमेटेड तो है ही नहीं, सब कुछ सच है। एक तो ये कह दिया गया कि वो जी आपको बीजेपी ने दिए, पिछले 6 दिन से यही रट लगाए जा रहे हैं। अब ये बताया कि ये फोटो भी क्या उन्होंने दे दी थी क्या? लेकिन ये सवाल नहीं है नाविका जी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि सरकार लाइन तय कर दे कि किसके ऊपर कितना खर्चा होना है। सरकार नहीं, अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी लाइन तय की थी, किसी ने नहीं कहा था उसको। एक आदमी यहाँ पर सपोर्टर कह रहे हैं कि वो पहले एक्टिविस्ट थे। अरे एक्टिविस्ट होने के बाद जब वो बन गए तब मुख्यमंत्री, मैंने कहा है कि छोटा मकान दे दो। मेरे लोग कह रहे हैं, आम आदमी के, मेरी पार्टी के लोग कह रहे हैं इतने बड़े मकान में नहीं रहना। एक ही आर्ग्यूमेंट आपके पास, आखिरी बात परविंदर सेठी, आखिरी बात, आज आम आदमी पार्टी का जितना मखौल उड़ाया ना कि जाओ तुम 2 रुपए का पड़ोस की आयुर्वेदिक दुकान से चूर्ण ले लो, अगर वो मुड़ करके ये कह दे कि पड़ोस में सुलभ शौचालय भी बना हुआ है, वहां चले जाना, तो क्या रह जाएगा? Well, I want to say, and this is, I haven't got this in the pictures, but there is a toilet picture there on your screens, ladies and gentlemen. I'm trying to get which is the toilet seat there, because the tender documents that we got and put out showed at least 2 bathrooms out of the 15 bathrooms in that palatial bungalow having pots that costed 4.5 lakh rupees, that were run by remotes, that had various kinds of buttons for various pressures of water, and even had some sort of an arrangement for hot air, cold air, temperature controlled air coming in. I can't see that in the picture, so I can't vouch for it, but I did see it in the tender documents and the description there. But more callers calling in. Manoj from Chennai, Vijay Dhal, New Delhi, Krishna Swami also calling in from Pune. Let's begin with Mr. Manoj. Mr. Manoj, do you think these visuals are animated visuals and artificial intelligence has replaced reporters of Times Now and Times Now Navbharat? Absolutely not, Navika. This is ridiculous. This holier than thou attitude of Kejriwal is the one thing which has put him in a spot of bother. Point number 2, the only person who has a constipated look on his face and needs the children is Mr. Ravi Srivastava. Sataji is not bonkers. Well, let's not get, with due respect, Mr. Manoj, let's not get personal here. But point taken, and really, it bothers me when people question the journalism that we do. 30 years into this business, we still continue to toil to get the story so that people can seek accountability, can see the truth. And Mr. Vijay Dhal from New Delhi, Mr. Vijay Dhal, do you also believe that this is a hit job, that we are targeting one political party, or do you think these are facts that the public should know? Because if Times Now and Times Now Navbharat hadn't exposed this,
would people actually know what was going on? Navika ji, with due regards, पूरी आप अपना टीवी बंद कर दें, नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे और हम आपको सुन नहीं पाएंगे. नाविका जी, विद ड्यू रिगार्ड्स, दुनिया देख रही है कि आप आदमी पार्टी के एक आदमी सच बोलने वाला दिखा दीजिए. एक आदमी सच बोलने वाला दिखा दीजिए. ये झूठों की पार्टी है. I'm sorry to say, सेठी साहब बैठे हैं, रवि जी बैठे हैं. They are all big liars. Well. I understand you're agitated. Yes, questions are being raised, but we haven't got satisfactory answers. And on that, I agree with you. Krishna Swamy from Pune, last caller on the Newshour tonight. Mr. Krishna Swamy, where do you stand on this story? Do you think these questions are fair, or do you think these questions are biased, as many people are questioning? Hello? Yes, Mr. Krishna Swamy. Hello? Mr. Krishna Swamy, can you hear me? Running out of time? Sorry, lost that call. Problems with the connectivity, but we'll continue to ask these questions. This is the big story, and we've taken it to the conclusion. We're looking for what will be done, but big reaction coming in right now. Our sources telling us 47 files related to the Chief Minister's residence building have been seized by the committee that is looking into this entire matter. 47 of those files been taken into custody. We'll have to wait and watch what this investigation really yields, and whether Mr. Arvind Kejriwal or the Aam Admi party will actually begin to give the answers to the questions that we've been raising, people of India have been raising. For now, this continues on the channel. This continues in terms of the questions we are raising. But we're taking a short break as I sign off. Thank you very much, ladies and gentlemen. And thank you to my panelists for joining me, including Mr. Parminder Sethi, who's had a very tough job defending the Aam Admi party tonight. Good night, ladies and gentlemen. Be safe. You were watching the News Hour at 9. Stay tuned.